गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोझिकोड जो है केरला में, उसको यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया गया है और ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूज़िक डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को लिस्ट ऑफ क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर। अब ये आपको एक लिस्ट दी गई है आपको पढ़ने के लिए कि इंडिया में कौन कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जिनको किस कैटेगरी में जो है ये रिकग्निशन मिली है। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क एक प्रोजेक्ट है जो कि यूनेस्को ने 2004 में लॉन्च किया था सिटीज़ के बीच में आपस में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, खासकर उन सिटीज़ में जो कि थ्राइविंग या एक्टिव एक्टिव सेंटर्स ऑफ कल्चरल एक्टिविटी है। ठीक है। अब ये सिटीज़ जो हैं हर कॉन्टिनेंट से आती हैं, हर रीजन से आती हैं, डिफरेंट इनकम लेवल्स और पॉपुलेशंस की हैं ये सिटीज़, और इनको अलग अलग फील्ड्स में डिक्लेयर किया जाता है। क्राफ्ट में, फोक आर्ट में, मीडिया आर्ट्स, फिल्म डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, म्यूज़िक। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इंडिया की सिटीज़ दी गई हैं कि क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में जयपुर और श्रीनगर हैं और कौन से साल में उनको डिक्लेयर किया गया है। डिज़ाइन में अभी तक नहीं है कोई सिटी, फिल्म में मुंबई है, गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद है, लिटरेचर में अभी कोझिकोड को डिक्लेयर किया गया है, म्यूज़िक में चेन्नई, वाराणसी और ग्वालियर जो है वो सिटीज़ हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नॉर्मल मानसून। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मानसून सीज़न जो है इस बार 94% ओवरऑल रेनफॉल के साथ ख़त्म हुआ है। एट्थ ईयर में एट्थ ईयर ऐसा रहा है जब नॉर्मल रहा है मानसून। तो लेकिन ये मानसून जो है बहुत इरेटिक रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेनफॉल बहुत ही डिफरेंट ऑब्ज़र्व की गई है। कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स रहे हैं जहाँ पर नॉर्मल डेली रेनफॉल नहीं हुई है, और नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री में 100% से ज़्यादा रेन हुई है। ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में कुछ जो है वो 80% से भी कम रेनफॉल हुई है। सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में लार्ज डेफिसिट्स रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम रेनफॉल में। ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज का रोल है। एक ग्रेटर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी आ चुकी है वेदर इवेंट्स में। अ, अकेला ऐसा कोपिंग मैकेनिज्म बचा है कि हम बेटर प्रिपेयर्ड रहें अनप्रडिक्टेबल इवेंट्स को फेस करने के लिए, और एक डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के ऊपर भी हमारा एम्फेसिस रहे। ठीक है। तो अगर हम देखें कि कैटेगरी ऑफ रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जो है वो डिसाइड की जाती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा, तो 5 ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है नॉर्मल या फिर नियर नॉर्मल रेनफॉल। मतलब अगर आपकी बारिश जो है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज, लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है? एवरेज रेनफॉल जो पिछले 1961 से लेके 2010 तक, मतलब पिछले 50 साल में जितनी एवरेज रेनफॉल हुई है 87 सेंटीमीटर्स की, उसके अगर 96% से 104% के बीच में है तो हम कहेंगे नॉर्मल रेनफॉल है। अगर बिलो नॉर्मल हम तब मानते हैं जब 10% से कम हो एलपीए से। ठीक है। मतलब 90 से 96% के आसपास अगर रेनफॉल हो तो। अबव नॉर्मल हम तब मानते हैं जब 104 से 110% के बीच में रेनफॉल हो। डेफिशिएंट तो है 90% से कम हो अगर, और एक्सेस तब मानी जाती है जब 110% से ज़्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में इनको एस्टेब्लिश किया गया था, और ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी है मीटियोलॉजी और अलाइड सब्जेक्ट्स की कंट्री में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर ही आती है, और हमारे को ये मीटरोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है ऑफ कोर्स। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं तमिल लंबाडी एम्ब्रॉयडरी। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पोरगई आर्टिसंस एसोसिएशन सोसाइटी, जिसमें 60+ वेमेन है, वो एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स को जो है वो मेक कर रही हैं और सेल भी कर रही हैं, ताकि आर्ट फॉर्म जो है उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट की जा सके। तो ये तमिल लंबाड़ी एम्ब्रॉयडरी है क्या? ये एक लंबाड़ी एम्ब्रॉयडरी है जिसमें कि विमेन अपनी खुद के अटायर को और हाउस होल्ड आइटम्स को डेकोरेट करती हैं। कॉटन और सिल्क फैब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है इसमें जनरली, कलरफुल कॉटन थ्रेड्स के साथ। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए जाते हैं स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स और सर्कल्स में। लोकल फॉरेस्ट, बर्ड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इन सब को भी जो है वो जो है बनाया जाता है। एल्डरली विमेन जो हैं इस ट्राइबल कम्युनिटी की, वो पेतिया नाम का जो है वो ट्रेडिशनल 5 पीस ड्रेस को पहनती हैं, जिसको मुशरू सिल्क से, जो कि कच्छ से लिया जाता है, उससे बनाया जाता है। अब ये लंबाड़ी कम्युनिटी जो है
ये लंबाड़ीज जो हैं ये आपके बंजारा हैं और ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में खासकर पाए जाते हैं। गोड बोली बोलते हैं ये, जो कि जिसको हम लंबाड़ी भी कहते हैं, और ये इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस का ही पार्ट है। इनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती लंबाड़ी लैंग्वेज की। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने सक्सेसफुली 70 mm रॉकेट्स और 20 mm टरेट गन्स जो है वो फायर किए हैं दिन और रात दोनों में। तो ये LCH प्रचंड जो है इसको HAL ने बनाया है। फर्स्ट इंडिजिनस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की डिमांड्स को मीट करने के लिए बनाया गया है, खासकर जो हमारी फोर्सेस डेजर्ट्स और माउंटेनियस एरियाज़ में ऑपरेट करती हैं। शक्ति इंजन इसमें बनाया गया है जो कि HAL और फ्रांस के सफरान ने मिलकर बनाया है, और इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेशनल क्लियरेंस 2017 से मिली हुई है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 288 किलोमीटर पर आवर है और जो इसका कॉम्बैट रेडियस है वो 500 किलोमीटर्स है, और ये लगभग 21,000 फीट तक की ऊंचाई पर जा सकता है। ये हेलीकॉप्टर में हेलिना मिसाइल्स लगे हैं जिनको हम ध्रुवास्त्र भी कहते हैं एयरफोर्स के वर्जन में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं केमैन आइलैंड्स। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। केमैन आइलैंड्स रिसेंटली FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है, और इसकी वजह से जो है ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो अब हैं हमारे NBFCs में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं इंडिया में। केमैन आइलैंड जो है ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है जो कि वेस्टर्न कैरेबियन सी में लोकेटेड है। इस टेरिटरी में 3 आइलैंड्स आते हैं, ग्रैंड केमैन, केमैन ब्राक और लिटिल केमैन, और ये साउथ ऑफ क्यूबा और नॉर्थ वेस्ट ऑफ जमैका में लोकेटेड है। इसको ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था 18th और 19th सेंचुरी में, और ये 1959 में आइलैंड एक टेरिटरी बना फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज़ की, और 1962 में जब ये फेडरेशन डिसॉल्व हुआ तो केमैन आइलैंड जो है वो ब्रिटिश डिपेंडेंस से ही जो है वो रहा है तब से। इंग्लिश यहाँ पर प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज है। अगर हम ज्योग्राफी देखें तो लो लाइंग कोरल रीफ्स है यहाँ पर। कैपिटल इसकी जॉर्ज टाउन है जो कि ग्रैंड केमैन आइलैंड में है। केमैन आइलैंड डॉलर यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। चीफ ऑफ स्टेट जो है वो यहाँ की UK की क्वीन होती हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यहाँ के प्रीमियर होते हैं। केमैन आइलैंड जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, एक ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर है, टैक्स हेवन है बेसिकली। यहाँ पर कोई कॉरपोरेट टैक्स नहीं लगाया जाता, लोगों के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं होता, रेजिडेंट्स के ऊपर भी कोई इनकम टैक्स, कोई प्रॉपर्टी टैक्स, कोई कैपिटल गेन। तो फिर कैसे जो है इनकी इनकम जनरेट होती है? ये फीस लगाते हैं टूरिज्म में के ऊपर, वर्क परमिट्स के ऊपर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रशियन पुलिस ने 60 जो है लोगों को अरेस्ट किया है जो कि एयरपोर्ट को स्टॉर्म करने लगे थे, मुस्लिम मेजॉरिटी कॉकेशस रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान में। ठीक है, तो ये जो है ज्यूइश पैसेंजर्स को अटैक करने की कोशिश कर रहे थे जो इसराइल से आए हैं। तो ये रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान जो है एक प्रोविंस है रशिया का, और ये वन ऑफ द 22 रिपब्लिक्स है जो कि रशिया का पार्ट है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ कॉकेसस में लोकेटेड है ये। दागिस्तान के साथ ही जॉर्जिया और चेचन्या भी आते हैं वेस्ट में, और अज़रबैजान आता है साउथ में। इसके ईस्ट में कैस्पियन सी है। मेजॉरिटी ऑफ दागिस्तानीज जो है वो सुन्नी मुस्लिम्स हैं। यहाँ की कैपिटल है माखाचकला जो कि कैस्पियन सी के कोस्ट पे लोकेटेड है। रशियन इंपीरियल आर्मी ने इसको 19th सेंचुरी में कॉन्कर किया था। रशिया के मोस्ट एथनिकली और लिंग्विस्टिकली वेरिएड रीजन में से एक है। अवार यहाँ की जो है वो लार्जेस्ट एथनिसिटी है। साइजेबल प्रेजेंस ऑफ डार्गिन्स, कोमिक्स और लेस्गिन्स भी है। लगभग 10% यहाँ की पॉपुलेशन एथनिकली रशियन भी है। ओके, दागिस्तान एक मेजर ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का कॉन्ड्यू है, मतलब बहुत सी जो है वो पाइपलाइंस यहाँ से गुजरती हैं रशियन हार्टलैंड की तरफ। ओके, कैस्पियन सी से। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्केबीज। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मलावी जो है वहाँ पर इन्फेक्शियस स्किन डिसीज़ स्केबीज का एक आउटब्रेक देखने को मिला है ड्यू टू क्लाइमेट क्राइसिस। अब ये स्केबीज एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो कि माइट से होती है, सार्कोपाइट्स स्केबी की वजह से, और ये एक इची रैश करती है जो कि स्किन के ऊपर फॉर्म हो जाता है। अगर इसको अनट्रीटेड रहे
लंबे टाइम तक, तो वो ये माइस्ट जो है स्किन के ऊपर कई महीनों तक रह सकते हैं। रिप्रोड्यूस होने लगते हैं ये स्किन के ऊपर और ये वहीं पर पलने लगते हैं, ठीक है। और ये स्किन के फोल्ड्स के बीच में आपको देखने को मिलेंगे, माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये ऑफ कोर्स। और ये कंटेजियस होता है स्किन की ट्रांसमिशन, और ये पर्सन टू पर्सन बहुत तेज़ी से जो है वो फैल सकता है। इसके सिम्टम्स होते हैं सिवियर इचनेस, इची लाइंस, बम्प्स, लार्जर रैश इन्फेंट्स और स्मॉल चिल्ड्रन में, और स्किन क्रस्ट और स्केली बन जाती है, ठीक है। आसानी से इसको ट्रीट किया जा सकता है स्किन क्रीम्स या पिल्स देकर, जो कि इन माइट्स को मार देती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिनटमैन 3 मिसाइल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो रिसेंटली पेंटागन ने कहा है, जो कि यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, कि उन्होंने मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो टेस्ट करना है, और आदर कर भी लिया है। और वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस जो सदर्न कैलिफोर्निया का है, वहाँ पर ये मिसाइल को लॉन्च किया गया है। सिलो लॉन्च मिसाइल है, इसको विदाउट अ वॉरहेड अटैच किया गया है टेस्ट करने के लिए। अब ये मिनटमैन 3 मिसाइल जो है अर्ली 1970s में ये पहली बार ऑपरेशनल हुए। इनको अब जो ये मिनटमैन 3 मिसाइल है, ये बेसिकली मॉडर्नाइज्ड है वर्जन है, और ये ग्राउंड बेस्ड स्ट्रेटजिक डेटरेंट का एक रिप्लेसमेंट है। 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, 6000+ माइल्स की इसकी रेंज है, और बोइंग कॉरपोरेशन ने इसको बनाया है। करंटली ये ओनली लैंड बेस्ड ICBM है जो कि यूएस के न्यूक्लियर आर्सेनल में मौजूद है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is UNESCO's Creative Cities Network. This topic is important for your art and culture section. So Kozhikode in Kerala has been designated as the UNESCO's City of Literature, and Gwalior has been declared as the City of Music in UNESCO list of Creative Cities Network. So this is the list which cities cities of India have been designated as which of the following um, uh, in which of the following fields of this UNESCO Creative Cities Network. For example, in crafts and folk arts category, Jaipur and Srinagar are there. In film category, Mumbai is there. Gastronomy category, Hyderabad is there. Literature category, Kozhikode is there, which has been announced recently. And in music category, Chennai, Varanasi, and Gwalior are there. So, what is this UNESCO Creative Cities Network? So basically, it is a project of UNESCO which was launched in 2004 to promote cooperation among cities which have certain recognized creativity as a strategic factor in their urban development. And these network of cities are thriving active centers of cultural activities in their respective countries. They these cities come from all continents and regions with different income levels and populations. So the UNESCO designates these creative cities in 7 fields: craft, folk art, media arts, film design, gastronomy, literature, and music. Okay, so the next topic is normal monsoon. This topic is important for your environment section. So this year, monsoon has ended with 94% overall rainfall, and this is the 8th year in succession when we have seen normal monsoon. But at the district level, the rainfall has been very erratic. So during this 4-month monsoon period, there have been very few instances of districts receiving normal daily rainfall, and this season has also produced second largest number of extreme rainfall events in the past 5 years. For example, in northwest and central parts of the country, more than 80% more than 100% rains happened during this season. But in eastern and northeastern region, they got barely 80% of the rains. Southern parts of the country had also seen large deficits on the during the rainfall season. So this is being attributed to climate change, that there is greater degree of uncertainty in weather events these days. The only coping mechanism available right now is to be better prepared to face the unpredictable events, and to increase our emphasis on disaster preparedness so that we can remove bottlenecks which worsen the impact of extreme weather events. So how do we categorize these
normal or below normal rainfall. So Indian Meteorological Department maintains 5 rainfall distribution categories based on long period average. Long period average is basically the average rainfall in the last 50 years, between 1961 to 2010, and it has come out to be 87 centimeters. So if there is 96% to 104% of this long period average in an year, we consider it as normal rainfall. If it is 90 to 96% of LPA, then we consider it as below normal rainfall. Above normal rainfall occurs when there is 104 to 110% of LPA. Deficient comes when it is less than 90% of LPA, and excess rainfall happens when it is more than 110% of long period average. Okay, so what is Indian Meteorological Department? It was established in 1875 and it is the National Meteorological Service of our country. It is the principal government agency in all matters relating to meteorology and allied subjects. So Ministry of Earth Sciences is the concerned ministry of it. So it provides current and forecast, and it this IMD takes meteorological observations, and it provides current and forecast meteorological information for weather sensitive activities. It also warns us against severe weather phenomena like tropical cyclones, nor'westers, dust storms, etc. So the next topic is Tamil Lambadi embroidery. This topic is important for your art and culture section. So Porgai Artisan Association Society, which has 60 plus women, has been making and selling embroidered clothes to ensure that there is awareness about the art form, and it is passed to the next generation. So Tamil Lambadi embroidery is being practiced by Lambadi community, and uh, it is being practiced uh, for a long time, and it has served the purpose of decorating the their own attire and household items. Basically, it is practiced by women, and this integrate embroidery is done by Lambadi women on cotton and silk fabrics using colorful cotton threads. So they undergo geometrical patterns with squares, rectangles, and circles, and they also have been influenced by local forests, birds, fruits, and flowers. The elderly women of this tribal community continues to wear the petia, which is the traditional five-piece dress, and it is made with mushru silk from Kutch. So, what is Lambadi community? So, these are also called Banjaras, and they are found in Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Karnataka. They speak the God Boli, which is also called Lambadi, and it belongs to the Indo-Aryan group of languages, but it has no script. So the next topic is light combat helicopter. This topic is important for your security section. So recently, Indian Army's light combat helicopter Prachand has successfully carried out inaugural firing of 70 rockets and 20 turret guns both day and night. So what is light combat helicopter Prachand? It has been developed by Hindustan Aeronautics Limited, and it is designed to meet the needs of Indian armed forces operating in deserts and mountainous areas. So this helicopter is fitted with Shakti engine, and it has been co-developed by HAL and France Safran. This helicopter has received operational clearance in 2017. It can fly at a maximum speed of 288 km per hour, and it has a combat radius of 500 km, which can go up to a service ceiling of 21,000 feet. So this helicopter has been equipped with Helena missiles, which is also the Air Force version of what we call Dhruvastra. Okay, so the next topic is Cayman Islands. This topic is important for your international relations. So Cayman Islands has recently been moved out of the FATF grey list, and this is expected to bolster global private equity funds who are in looking to invest in NBFCs based in India. So Cayman Islands is a British overseas territory which is located in Western Caribbean Sea, and this territory comprises of three islands of Grand Cayman, Cayman Brac, and Little Cayman, which are located in south of Cuba and northwest of Jamaica. So Cayman Islands were colonized by the British during the 18th and 19th centuries,
and they were administered by Jamaica after 1863. So these islands became a territory within the Federation of West Indies in 1959, and when the federation dissolved in 1969, the Cayman Islands chose to remain a British dependency. So English is the predominant language here, but they also speak some local dialects. So the geography of this Cayman Islands is low-lying with coral reefs. Its capital is Georgetown, which is located on Grand Cayman Island. So Cayman Island dollar is the official currency here, but American money is also widely accepted. So government system here is parliamentary democracy, and chief of state is the Queen of United Kingdom, and head of the government is the premier. So Cayman Island has a mixed economic system, but it is a thriving offshore financial center, which means that it is a tax haven. So it does not impose any corporate tax on companies, but also it does not impose any tax on its residents. There is no income tax, no property tax, no capital gains tax, no payroll tax, no withholding tax. But how does it generate income then? So Cayman earns revenues via fees which are related to tourism and work permits, financial transactions, and import duties. So the next topic is Republic of Dagestan. This topic is important for your international relations. So the Russian police has recently arrested 60 people who were suspected of storming an airport in Muslim majority Caucasus Republic of Dagestan, and they were seeking to attack Jewish passengers who were coming from Israel. So it's a province of Russia within the Russian Federation, and it is one of the 22 republics which are part of the Russia, and it is situated in the eastern part of North Caucasus. So it borders the Georgia and Chechnya to the west, and Azerbaijan to the south. To its east is the Caspian Sea. So majority of the Dagestanis are Sunni Muslims, and their capital is Makhachkala. So it is located in Dagestan's Caspian Sea coast, and this Makhachkala was conquered by the Russian Imperial Army in the 18th century, and it has been a pre-revolutionary trading port. So Russia's it is this Dagestan is Russia's most ethnically and linguistically varied region, and it has about 40 different ethnicities. Avars are the largest ethnicity here. After the Avars, there is sizable presence of Dargins, Comics, and Lesgins, and about 10% of the population here is ethnically Russian. Dagestan is also a conduit for major oil and gas pipelines which go from Caspian Sea to the Russian heartland. Okay, so the next topic is scabies. This topic is important for your social issues. So Malawi has seen a resurgence of infectious skin disease, scabies, in an outbreak which is being linked to climate crisis. So scabies is a parasitic infection caused by a mite called the sarcopite scabies, and it causes an itchy rash to form on the skin. If left untreated, it can these mites can live on the skin for months. Of course, they are microscopic mites. They reproduce on the surface of the skin and then burrow into it, and they lay eggs. So these scabies are often found in the skin folds, and this is contagious, and it can spread from person to person through close skin contact. Um, it causes severe itchy lines, bumps, larger rash in infants and small children. And more severe type of scabies is also called crusted scabies, and it makes the skin crusty and scaly. Scabies is easily treated, and skin creams and pills kill the mites, and of course gives relief. So the next topic is Minuteman 3 missile. This topic is important for your security section. So recently, Pentagon, which is the Department of Defense of US, has announced latest test of Minuteman 3 intercontinental ballistic missile. So this has been tested from Vandenberg Space Force Base in Southern California. It is a silo launched missile which has been tested without a warhead attached, of course. So Minuteman missiles are strategic weapon systems which are which have intercontinental range, and they first became operational in early 1970s. So originally it was supposed to be kept in service for just about 10 years, but they were later on modernized, and and they were replaced by ground based strategic deterrent also.
So it's a three-stage solid fuel missile. It has a range of about 6,000 plus miles, and Boeing Corporation has designed and manufactured it. It is currently the only land-based ICBM in the US nuclear arsenal. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.